Hello, sir. Yeah, dear children, I believe I'm audible. Hello, am I audible? Yes, Sir, you are audible. That's great. तो हाँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हियर द मार्क्स फ्रॉम 1 to 100 दे आर ग्रुप्ड इनटू 10 क्लासेस. ओके. तो एक रेंज जो हमने बनाया है, दे आर कॉल्ड एज क्लास. ओके. Such as 1 to 10, so and so, so and so. It is a convention that the number of classes in the table should not be less than 5 or more than 50. So this is not a rule, but a standard convention. जैसे कि मैंने आपको बोला, if I'm giving you a statistics means summary होना चाहिए. Summary should be, मतलब summary इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर डेटा कम पड़ जाए, मतलब क्लैरिटी कम पड़ जाए. और समरी इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको हैंडल करने में तकलीफ हो जाए. Hence, they say the number of classes, मतलब number of rows, should be between 5 and 50. तो ऐसे हमेशा हमें मैनेज करना चाहिए. It is not a hard and fast rule, but we should always try to maintain between 5 and 50. Okay. I hope it's clear. For example, अगर 1 to 200 का क्लासेस बनाना होगा, सो उस टाइम पर फिर मैं क्या करूंगा, 1 to 20 करके बनाऊंगा. 1 to 20 एंड सो, लाइक 20 to 40 ऐसे बनाऊंगा. तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 10 क्लासेस में काम हो जाएगा मेरा, 10 क्लासेस में. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. या, सो क्लास लिमिट्स. The end numbers of the class intervals are called as class limits. For example, when I say 11 to 20, 11 is a class limit, 20 is also a class limit, but 11 is called as lower class limit and 20 is called as upper class limit. So I hope class limit जो term है, that is clear. Another term is what, class width. If both the end numbers of the class are inclusive, then the difference between upper and lower limit of class interval is called class width. For example, yes, Naitik, tell me what's your query. Sir, first you explain class width because I had doubt in that only. अच्छा. सॉरी. ठीक है. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, क्लास विड्थ इज व्हाट. क्लास विड्थ इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, लेट्स से, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके अंदर कवर हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास विड्थ. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम 11 to 20 द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कवर्ड is 10. Okay. So in this case, from 11 to 20, if we are considering 11 also inside this group and 20 also inside this group, so when you count from 11 to 20, your class width is how much? 10 only. Okay. Naitik? Sir, in the textbook it is given that we have to subtract the upper class limit from the lower class limit, but it should be we have to subtract them and add one to it. They Yeah. have not mentioned of adding one. Yes, yes. I can see that. I will just inquire on that why has this uh, not been mentioned over here. I'll just inquire and get back to you. But logically speaking, class width is what? Width of the class. Width कितना है, उसके अंदर कितने elements हम लोग cover कर रहे हैं, that is the width. In this case, it is 10. Okay. Okay, sir. Hmm. Thank you. Now, the next terminology is class mark. This should have been bold actually, but it is not bold. I don't know why. Okay. What is class mark? Class mark is also called as midpoint. Midpoint क्या है? Very simple. Now, for the class of 51 to 60, the midpoint will be the numbers between them. कैसे पता करेंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, खत्म. दैट इज द मिड. So in this case, your midpoint will be 55.5, which is logically correct because 51 से लेकर 55 तक तुम्हारे लेफ्ट साइड में होता है, 56 से लेकर 60 तक तुम्हारे राइट साइड में होता है. इधर भी 5 एलिमेंट्स है, इधर भी 5 एलिमेंट्स है, तो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट इज द पॉइंट
Midpoint is basically the point between 55 and 56, which is nothing but 55.5. I hope it's clear. Sir, how did this formula appear? How did it come? Uh, the logical approach of this formula is, it is better I should not discuss that logic with you, otherwise you will get confused. Right now, you simply uh, consider it as a formula. Okay. So midpoint ka logic to I have already explained. The formula is basically add the first and the last number and then divide by two. That's it. Okay. Okay, sir. Great. Sir, in higher classes, we will learn about the proof. Yes, you will learn. Okay, sir. Now, let's understand the method of writing down the class intervals. Now, class is what? It's basically the range. Now, in this case, the class from 11 to 20, okay, it will have a Nida class mark. Jaidun. Sorry, Satyaj, can Nida you please mute? Jaidun. Nida. I have muted you. Please ensure of muting yourself before talking to your family members, my dear children. What I was saying, okay, 11 to 20 is the class. Uska class mark kya hoga? Class mark is basically the midpoint. So again, simply add them, divide by 2. Your midpoint is how much? 15.5. And so on. From 21 to 30, the midpoint is 25.5. And so on, it goes on. Wait. Yeah. If, okay, fine. So this is one set of class. Now this is another set of class. Like 10.5 to 20.5. That is also one set. You can consider that also. So उसमें क्या है total sorry, इसमें भी when you add them 11 plus 20 is 31. Here also 10.5 plus 20.5 is again 31. So 31 by divided by 2 gives you 15.5 would be. So midpoint remains the same. What happened? 11 और 20 का भी midpoint 15.5 है, and 11 को 0.5 पीछे लेके जाओ, it becomes 10.5. 20 को 0.5 आगे लेके जाओ, it becomes 20.5. तो अगर पीछे और आगे दोनों सेम नंबर से लेके गया है, then the midpoint remains the same. That is the logic. चलो मैं एक और लॉजिक समझा देता हूँ. लेट मी कंसिडर 15.5 इज द मिड पॉइंट. ओके. अभी आपको तो पता है कि 11 है और 20 है. सो इफ आई एम टेकिंग दिस 11 by 4 points behind, it becomes 7. And if I'm taking 24 points ahead, it becomes 24. 7 और 24 का भी मिड पॉइंट 15.5 ही रहेगा. सो मिड पॉइंट विल नॉट चेंज if you are taking the boundaries away from each other or towards each other by same number of points. Okay. ये एक मैंने लॉजिक समझाया आपको. इज इट क्लियर? So, या. Sir. सो नीचे भी वही समझाया उन्होंने. इवन इफ द क्लास इज फ्रॉम 11 to 20 और it is from 10.5 to 20.5, in both the cases the class mark will remain same. Okay. Now Sir, I have a doubt. yeah, tell me. Sir, why don't we take the class as 10 to 20? Okay, so I'll tell you why. Now what happens, uh okay, let me consider you're taking 10 to 20. अब इसके पहले वाला क्लास था 1 to 10, right? Now if you get a score of 10, कहाँ यहाँ डालोगे या यहाँ डालोगे? It's a confusion, right? In order to avoid that confusion, we मतलब we don't write common numbers. We make it 11 to 20. And in the next line, we will not write 20 to 30. We will write 21 to 30 because 20 is already covered upstairs. Understood? Yes, sir. Yeah. Naitik, what's your query? Sir, do we have exclusive and inclusive form in this class? You in class के अंदर exclusive and inclusive. Yeah, the class type. Yeah, class type में you should be having. I'll have to check further. You should be having. Okay, I'll be sir. covering them. Hmm. Naitik, Sir. बताइए बताइए. Yes, sir.
सर वो जो क्लास रहती है उसमें एवरी ईच क्लास इज इक्वली डिवाइडेड ना। ऐसा नहीं हो सकता ना, पहले क्लास में 9 चीजें, दूसरे क्लास में 10, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हाँ, गुड वन, गुड पॉइंट. सो माय डियर चिल्ड्रन, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स एज अ समरी. अब समरी जितना हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाएंगे उतना बेटर होता है ना. So you should always ensure of each class having same number of elements or same class interval. Hence, if you are considering 1 to 10 in the first class, उतना ही होना चाहिए दूसरे वाले में भी. So hence 11 to 20 makes sense. Understood? सर बोलिए. और वो एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जस्ट ऊपर वाली लाइन में द अपर इन वेयर इन टेबल टू द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास, उसका मतलब आप समझा सकते हो? I'll come to that point. I'll go line by line. Okay. So in this case, the class is written in one way. In one way, it is what? 11.11 to 20 ऐसे ऐसे लिखा. दूसरा वे 10.5 to 20.5. ये हम कब करते हैं ये मैं पहले बता देता हूँ. नाउ फॉर अस इट इज प्रिटी क्लियर कि हमारे जो नंबर्स है वो नंबर्स या तो 10 होंगे, 10 के बाद 11 ही हो सकते हैं, 11 के बाद 12 ही होगा. सो नो डेसिमल पॉइंट्स कुछ नहीं रहेंगे, प्लेन इंटीजर्स रहने वाले हैं. 1 2 3 4 5 6, ऐसा 5.5 6.5 कुछ नहीं होगा. इन सच केसेस व्हाट डू वी डू? सो क्लास को लिखने का एक तरीका ये है 11 to 20, then 21 to 30, where we are assuming कि हाँ भाई 11 and 20 both are included in this particular class only. Now, the same class can be written in one more way. So here we are including the boundaries, including the end terms or class limits. Here we are including the class limits. The same thing can be written in one more way, where we write, instead of writing 11 to 20, 0.5 पीछे और 0.5 आगे लेंगे, we'll write this as 10.5 and 20.5. For the next one, instead of writing 21 to 30, we'll take 0.5 पीछे and 0.5 आगे. We'll write this as 20.5 to 30.5. Now, in this case, we we consider this possibility only in those cases where we are sure कि 0.5 के terms आने ही नहीं वाले हैं. That means 20.5 can never occur. Therefore, ये confusion कभी होगा ही नहीं. Am I clear? ऐसे हम तभी ही लिखेंगे जब हम श्योर है कि ये कॉमन नंबर्स कभी ऑकर नहीं हो सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. बोथ both are correct ways of writing. This one includes boundary boundary numbers, and this one excludes boundary numbers, which means 10.5 तो आएगा ही नहीं, मैं जानता हूँ. 10.5 आया तो भी वो इसके अंदर कंसिडर नहीं करना है. 10.5 एंड 20.5 दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं उसको, दिस क्लास. ओके. So this is how we have written. So in this summary also they have said the same thing. Class 11 to 20 can also be written as 10.5 to 20.5 as shown above in table 1 and 2. Whichever way we write the table, the class mark remains the same. वो तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया. But I generally prefer to write like this, where I'm including the boundaries as well, because this avoids confusion. Both are correct ways of writing, but this is the preferred way of writing. ठीक है. In both cases, they have calculated class marks and they have said कि okay fine दोनों same रहेगा, which I've already done for you, so I'll not be repeating that. Now in table 1, the upper limit and lower limits of each class are included in that class only, whereas in table 2, the upper limit is excluded from that class. हाँ. Now, okay fine. Now somebody might think कि okay fine जितिन सर आपने तो बताया, you said that 0.5 वाले टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे केसेस में यू हैव टू कंसिडर. ना व्हाट इफ कि ऐसा सिचुएशन नहीं है, 0.5 आ रहा है.
But still you have to write like this. ऐसा कुछ situation अगर आया, then in that case how to deal with it? Very simple. In that case you should always remember upper limit को exclude करना है. For example, in this case 10.5 to 20.5 में you will include 10.5 but you will exclude 20.5. In second case you will include 20.5, you will exclude 30.5. Which means if you are getting a data 20.5, 20.5 class first class में जाएगा या second class में जाएगा? कहाँ जाएगा? Where will it go? Second. Second Second में class. Second जाएगा. Yes. class. Yes. Similarly, if you get 30.5, that will go to the third class. Because in third, we'll be including 30.5, but we'll be excluding 45, 40.5. So all the upper limits will be excluded in that case, but the lower limit will be considered. Sir, so in that case, what if we get the value as 60.5 then? Then you will have to create one more class, 60.5 to 0.5 to 10. 70.5, and you will put it in that class. Okay, sir, got it. Okay. ठीक है. Now, graphical representation of statistical data as compared to the written statement. So अब तक क्या कर रहे थे? We were writing things, we were making the tables. ठीक है. सेंटेंस में लिखने से तो बेटर ही होता है टेबल्स बनाना. डेफिनेटली ऑल टाइम बेटर है, जल्दी समझ में आ जाता है. वेरी ट्रू. बट टेबल से और बेटर हो जाता है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ और जल्दी समझाता है अपने को. जैसे कि मराठी 60, हिंदी 80, इंग्लिश 70, ऐसे डिटेल में पढ़ने के बाद पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा है. वेराज ग्राफ में ना, इन द फर्स्ट स्पॉट इटसेल्फ वी विल अंडरस्टैंड कि किसमें सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम. तो वी कैन डायरेक्टली get our conclusions easily from graph as compared to table. Therefore, graph is better than table. Therefore, we need to learn to know, sorry, to draw different types of graphs. The first one, there are different types of graphs available. The first type of graph is called as bar graph. It is the simplest and most widely used graph in which, sorry, the numerical data is represented by the heights of regular bars of equal width. For example, marks obtained out of 100 in different subjects by a student are given below. Marathi 60, Hindi so and so, English, science, math. So what do? We make a graph. In order to make the graph, we need to, in order to make the bar graph, we will need two axes. The first one is x-axis and the second one is y-axis. Two axes we need. किसको कुछ भी दे सकते हैं, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि किसको क्या देना है, बट इन जनरल, सॉरी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इन जनरल जो कंपेयर करने का मतलब, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? मार्क्स को कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू कंपेयर द मार्क्स. सो मार्क्स इज अ कंपैरिजन फैक्टर फॉर अस. सो वॉट एवर इज अ कंपैरिजन फैक्टर, देर आर टू थिंग्स. वन इज मार्क्स, द अदर वन इज सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोग कंपेयर करने वाले. वी आर गोइंग टू कंपेयर द मार्क्स of these subjects. So comparison factor is marks. So whichever is the comparison factor that we give in the y-axis, because that is easily readable. Okay. And the other one, the other one we give in the x-axis. Like और किसका कंपेयर करना है? सब्जेक्ट्स का कंपेयर करना है, वो एक्स एक्सिस में होगा. क्या कंपेयर करना है, वो वाई एक्सिस में होगा. व्हाट टू कंपेयर, दैट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस. ऑफ विच टू कंपेयर, that should be on the x-axis. Now, in this case, I'll write Marathi, Hindi, English, Science, and Math on the x-axis. So basically, I've written the name of subjects on the x-axis and the marks on the y-axis, starting from 0 to 100, because out of 100 it is. Okay. Now, for example, if Marathi में 60 का score है, तो 60 से I'll just take a measure from 60, keep a scale over here, and इस level पे I'll draw a bar like this, like how they have drawn. And if Hindi I've scored 80, then इस level पे I'll keep the scale and I'll draw another bar. मतलब ये bar should be above Marathi, above Hindi, above respective subject की bar बनाएंगे हम लोग.
ऐसा नहीं कि इंग्लिश यहाँ पर लिखा और बार यहाँ पे बनाई, इट शुड नॉट हैपन। सो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके ठीक ऊपर उसका बार रहना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। सो इंग्लिश के ठीक ऊपर आई ड्रॉ बार, कहाँ तक बनाएंगे, 70 तक बनाएंगे, सो 70 तक उसका बार, लाइक दिस। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, साइंस के ऊपर 80 तक का बार होना चाहिए, सो 80 तक का बार ये रहा। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ, मैथ के ऊपर 95 तक का बार होना चाहिए, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द बार ग्राफ। सिंस वी आर मेकिंग बार्स, बार है ना ये चॉकलेट बार्स जिस तरह दिखता है, दीज आर बार्स। So since we are making bars like this, we call this graph as bar graph. Any doubts so far? Hmm. ठीक है। These things I've already explained. So this type of graph is called as bar graph. Now the next type of graph which we are going to learn is called as histogram. Histogram is very similar to bar graph. Okay, it's very easy. It is not at all difficult. जैसे bar graph में we need two axes. Similarly, in histograms also we need two axes. Now, in histogram, what do we do? Uh, it's a graphical representation of grouped frequency distribution. So we will be taking the groups को हम लोग ग्राफ में बना के दिखाएंगे in terms of bars. In histogram also we are going to draw bars only. So सबसे पहले what I'll be doing, I'll be grouping the data. For example, if they have considered the weights of 40 students, okay, weight 40 students का weight consider किया, उसको different class में divide किया. For example, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. Now, my question, if a student is weighing 50 kg, कौन से ग्रुप में, कौन से क्लास में आएगा वो? ये ऊपर वाला या नीचे वाला? सर सर नीचे नीचे वाला। वाला। वेरी गुड, नीचे वाले में आएगा. सो यू नो थिंग्स नाउ. वेरी गुड. या सो आई हैव टेकन द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली. अब मुझे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आई हैव टू क्रिएट द ग्राफ. So how to create the graph? Very simple. I'll take, I'll draw an axis. I'll just look at the numbers. It starts from 30 and ends at 60. So I'll start at 30, then goes 35, then goes 40, then goes 45, and so on. Okay. Then ये रहा y axis. इस पे 1 2 3 4 5 6 like, so 1 से लेकर let's say 12 तक पूरा डाला है, क्योंकि यहाँ पर maximum number is 11. So I'll just go one beyond that, 12. 12 तक पूरा डाल दिया. Now 30 to 35 का जो range है, 30 से लेकर 35 तक, I'll be making bar between 30 and 35. उसका maximum limit कितना है? 6. So let me consider this is 6. So 6 के height तक I'll be drawing the bar like this between 30 and 35. Now the next bar is between what? 35 and 40. So 35 and 40 के बीच में I'll draw a bar till 10. So let me say this is 10. I'll draw a bar from between 35 to 40. So 30 and 35 का bar यहाँ तक गया 6 तक. 35 and 40 का bar उसके ऊपर गया like this. And 45 and 40 and 45 का bar उसके भी ऊपर गया like this. Till 11 it goes. And then again 6, 45 and 50. So this is how you create histogram. So histogram में what happens? The boundaries are matching. Hence the bars will also be touching each other. If since the boundaries are touching, the bars will also be touching each other. So histogram भी एक बार ग्राफ ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि बार्स आपस में टच करते हैं. That is called as histogram. Do you understand this? Sir, I have a doubt. Sir, Yes, can you draw a bar graph for this? sure. Like, what do you do for a bar graph if you have 30 to 35? Yeah. So what I'll do, since anyway I'm not going to consider 35, so I'll change the class to 30 to 34, then 35 to 39, and so on. समझे? 40 to 45, Yes, sir. sorry, 40 to 44, ऐसा. Then in that case, 30 to 34, this is my one bar. Then
35 to 39, this is my next bar, and so on it will go. Okay, Sir. Thank you, sir. so yeah, in that case दो bars के बीच में distance में दिखा सकता हूँ. Next is what? Frequency polygon. It is also a graphical representation of the group It is also a graphical representation of group frequency distribution. The midpoint of the classes are shown on the x-axis and the frequencies are shown on the y-axis. The points are plotted on the graph, then joined with the help of a ruler, like this. So we are going to plot the midpoints and then we are simply going to join the points. In this case, the table, same table we have used, histogram वाला table, 30 to 35 6 है, 35 to 40 so and so so and so so and so करके लिख दिया. So 30 to 35 का midpoint, when you calculate, it will be 32.5. 25 to 30 क्यों लिखा है फिर? डेटा गलत है क्या? I think the data is wrong. Yep, the data is wrong. ठीक है. So I'll just plot over here itself. So, in any graph, okay, fine. So technically speaking, if this is a graph, so this starts with 0. So frequency में तो आप कैसे करते हो 1 2 3 एंड सो ऑन करते करते जाते हो. यहाँ पर तो 12 तक जा रहे हो. बट एक्स एक्सिस में क्या है? स्टार्ट हो रहा है 30 से. ना यू थिंक यार, 0 के बाद अगर मैंने 30 इधर डाला, एग्जाम्पल, 30 के बाद 60 आना चाहिए इधर. बिकॉज इफ दिस डिस्टेंस इज करस्पॉन्डिंग टू 30 यूनिट, देन उतने डिस्टेंस में वापस 60 लिखना चाहिए मुझे. बट मुझे 30 और 60 के बीच में ये सब दिखाने का. सो इतने छोटे जगह पे इतना सब कैसे दिखाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो व्हाट वी डू, वी वांट 30 over here and we want 60 over here, which means उनके बीच में equal distribution होना चाहिए, like 35 40 45 50 55 60 and so on. So in that case what do we do? मतलब ये 30 और 60 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी यूनिफॉर्म. बट व्हाट अबाउट 0 and 30? इतने छोटे जगह को मैं 0 से 30 तक दिखा रहा हूँ. तो इन दैट केस, जस्ट टू से कि भाई 0 और 30 के बीच में बहुत सारा जगह है, बट आई एम नॉट मेकिंग ओवर हियर बिकॉज मैं अपना पेज सेव करना चाहता हूँ या जगह वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी सिंपली ड्रॉ अ zigzag लाइन आफ्टर 0, just to show कि भाई there are numbers over there but I'm not showing because it is not important to me, like over here. Sir, king, right? King. Yes, it's called as king. So after 0, when you're writing 25, so ऐसा तो नहीं 5 5 5 10 15 ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है आप. So what you'll do, you'll draw zigzag lines. This represents कि probably इधर बहुत कुछ numbers है, but we are not mentioning it in order to save our time. Okay. Now पहला वाला तो 6 है. 6 पे किधर डालना है? 6 6 30 और 35 के बीच का मिड पॉइंट लेना है आपको. 6 पे आके ज्वाइन करना. देन 35 टू 40, उस पे 10. 35 टू 40 पे 10. देन 40 टू 45 पे 11. 45 टू 50 पे 6. 50 टू 55 पे 5.
55 to 60 पे 2। सो सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ही मैंने ज्वाइन किया, इफ यू ऑब्जर्व। नाउ इफ यू ज्वाइन द लाइन लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, ये हवा पे खत्म होता है। सो वी नीड टू कंप्लीट इट, तब जाके पॉलीगॉन बनेगा। तो व्हाट वी डू, इसको एक्सटेंड करूंगा मैं। आई विल राइट टिल 65, देन 60 और 65 के बीच के मिड पॉइंट को प्रीवियस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लूंगा। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 25, 30 और 25 के बीच के मिड पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, एंड दैट्स हाउ they get joined to the ground. Now, in this graph, what mistake they have made is till 60 you have the data, right? Till 60 you have the data. They should have joined this point over here. So this would have been like this. This was the mistake. Rest is correct because this is corresponding to the midpoint of this thing. This is corresponding to the midpoint of this. This is corresponding to midpoint of this, corresponding to the midpoint of this, corresponding to the midpoint of this, corresponding to the midpoint of this. Yes, Naitik, what's your query? Sir, I didn't understand. For 30 to 35, you joined in the middle, but for the first and the last 60 to 65 and 25 to 30, where did you join? And in the graph in the book is correct or not? Because for 30, 25 to 30, it is showing first midpoint, and then 30 it is Listen, showing Naitik, 30 to Naitik, 35 it is not showing midpoint. hold on. First of all, ठीक है, डायग्राम बनाने पे प्रॉब्लली उन्होंने इसके ठीक ऊपर बनाया, मैंने इसलिए यहाँ पर हेंस आई हैव मेड दिस डॉटेड लाइन टू शो यू दैट 30 टू 35 के बीच के मिड पॉइंट को ही ये प्लॉट करना चाहिए। ओके, 35 टू 40 के बीच का मिड पॉइंट है ये, 40 टू 45 के बीच का मिड पॉइंट इज दिस, 45 टू 50 के बीच का मिड पॉइंट इज दिस, 50 टू 55 का मिड पॉइंट इज दिस, 55 टू 60 का मिड पॉइंट इज दिस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Sir, दिस मच इज क्लियर? ठीक है। नाउ सो यू हैव प्लॉटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 based on table. Based on table, you have plotted 6. But you will need to complete the diagram by bringing it to the axis. Now, how do we bring it to the axis? आपका पहला डेटा तो 30 और 35 के बीच में है ना, सो उसके पहले we will write same interval पे we will go behind, we will make 25 over here, and then 25 और 30 के बीच का जो mid point है that will be your starting point. From there you have to join 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and over here also 6 से लेकर end में कैसे conclude करोगे? You'll draw a point between 60 and 65 and then you'll draw it over there like this. okay, sir. Sir, अब why like समझ that? गया. Sorry, Sir, why like that? That you start from 25 to 30 and end from in 60 to 65. because it's a polygon, my dear child. Polygon means rectangle is a polygon, triangle is a polygon. It's a closed shape. The shape should be closed. So, sir, why do we end it in the next interval? That is my question. Otherwise, it will be irregular. Am I correct? Sir, so irregular polygons also exist, right? No. Irregular, not in terms of polygon, my dear child. Irregular in terms of the protocol or the procedure which you have used. Each and every point you have plotted is coming from a midpoint of a range. Then why should this first and last point should be different? It should also come from the midpoint of a range, right? Okay, sir, got it. By the way, sir, meeting is about to end, so we can rejoin again. No, we are done with the session actually. This was the last topic which I was going to explain to you. Okay, sir, okay. Okay? Okay. Dear children, that's all for the day. See you next week. Till then, take care. Bye bye. Bye, Thank sir. you, sir. Sir, Bye, thank you, sir, sir. thank you, sir. Good night, sir.